हाय, वेलकम बैक। क्या तुम्हें भी वो दिन याद है जहाँ पर सुबह सुबह स्कूल जाने पर टेबल पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक ग्लास दूध का जरूर मिलता था। तुम उसमें हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बूस्ट, कॉम्प्लान या कुछ भी डालो, इट्स योर प्रेफरेंस। बट कैसे ही हमारा पूरा बचपन उस एक ग्लास दूध के इर्द गिर्द घूमता था। वो फिर खुशी खुशी पियो या फिर माँ की डांट सुनकर नाक दबाकर। उसके बिना तो मानो माँ का मिशन ही कंप्लीट ना होता। आज भी a glass full of milk hits the nostalgia of good old days. Do you know, White Revolution in India was launched on January 30, 1970 as Operation Flood under supervision of Dr. Verghese Kurien, who is also known as father of White Revolution, जिनकी वजह से इंडिया ने पूरी एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को चेंज कर दिया परमानेंटली। सभी के घर में अब दूध पाया जाने लगा। इस रेवोल्यूशन से पहले इंडिया एक मिल्क डेफिशिएंट देश था, पर अब वह आत्मनिर्भर है। अमूल, जिसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, इसने बीच के मिडिलमैन के रोल को एलिमिनेट किया और स्मॉल होल्डर्स को डिवाइड किया थ्री टियर कोऑपरेटिव में, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, जिससे 80% कंज्यूमर्स को डायरेक्टली रूरल फार्मर्स से जोड़ा गया। Dairy farming in India is a largest self-sustainable rural employment generator और रूरल वुमेन इसकी बैकबोन बनी। 1970 से 2020 की टाइमलाइन देखी जाए, प्रोडक्शन 22 मिलियन टन से ओवर 200 मिलियन टन तक पहुंच गया। It's a lot, right? Thanks to Verghese Kurien, who had such great vision to change whole industry. June 1 globally is celebrated as World Milk Day और इस साल का ग्लोबल थीम था Celebrating Women Farmer to highlight and appreciate millions of women who act as backbone of this dairy farming, rural entrepreneurship and sustainable food security worldwide. In India alone, 70% of day-to-day dairy operations such as cattle feeding, first aid to local milk pooling, everything is massively operated and managed by women. This day serves as an annual reminder of White Revolution, how it transformed India, that is today, which yields over 230 million tons of milk annually. But there's an interesting statistic. We produce 25% of world's milk. Despite that, we share below 1% of dairy export. मतलब क्वांटिटी वाइज वी आर प्रोड्यूसिंग मिल्क जिससे दो तीन देशों की जरूरतें पूरी हो जाए, पर उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट ना के बराबर हैं। वर्ल्ड के लीडिंग डेयरी एक्सपोर्टर को देखें, जैसे कि न्यूजीलैंड, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, तो फंडामेंटली काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द की डिफरेंस इज कॉर्पोरेट फार्मिंग वर्सेस रूरल लाइफलाइन। यूएस एंड न्यूजीलैंड में डेयरी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है। फार्म्स ऑपरेट होते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि फैक्ट्रीज होती हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मार्जिन फॉर एक्सपोर्ट। और इंडिया में डेयरी इज अ सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट फॉर 80 मिलियन रूरल फैमिलीज, जो वहां पर एक कमर्शियल एंटरप्राइज है इंटरनेशनल शिपिंग के लिए। वह हमारे लिए एक सोर्स है डेली कैश इनकम और न्यूट्रिशन का। Then another difference is yield gap. They use advanced machines, optimized feed, and climate control barns. So their cows produce up to 10 times more milk per day than an average Indian cow. जिसकी वजह से international exporters have much lower cost of production per liter of milk, which results in high value in global market. Third difference is strict quality control. There, majority of exporters use automated milking system where milk goes directly from cow to refrigerated tankers without human contact, which ensures low bacteria count. And in India, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, but if you would have watched Trustified video, you will know that our milk is contaminated with bacteria, which makes it harder to align with uniform sanitary standards, and it leads to rejection from strict regulatory markets like EU and US. This hygiene factor double downs on our milk quality.
जहां पर हम सब इस बात से तो एग्री करेंगे कि बिजनेस के लिए वी डोंट इम्प्रूव कंडीशन फॉर लाइफस्टॉक और इन्वेस्ट इन मशीन, वी गो फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव, जैसे डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बना लेना। वी हैव केमिस्ट इन एवरी कॉर्नर। फिर हेल्थ पर कुछ भी इफेक्ट हो, business should thrive. And that's how adulterated food enters into market. It gets distributed, enjoyed without any warning. हमारे प्रोडक्ट्स में ड्यू टू कंटेमिनेशन अगर कोई देश बैन लगा दे तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज थ्रेट फॉर आवर हेल्थ, लाइक वेयर आर द चेक्स एंड balances, or we are just too casual about it. For us, quality does not matter until quantity is fulfilling needs of millions. Fourth factor is mismatch of source. In India, milk comes from both buffaloes and cows, but globally, the market is totally built around cow's milk, which I feel little skeptical about because to be honest, we all have grown up drinking it without being able to tell the differences. But if it doesn't suit their preferences, it makes export and demands more restrained. Fifth factor is we are competing for wrong product. Yes, globally the trade is dominated by high margin processed goods like cheese, infant formula, and whey protein. And our 85% of milk production is sold in its raw and liquid form. Our minimal export serves traditional items like ghee, butter, or skimmed milk powder, while cheese is the least focused item. Last factor is poor management. According to data, India loses roughly 3% of its total milk production, which is roughly around 6.3 million ton per year, entirely due to poor cold storage and export network. न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश रिलेटिव टू इंडिया इट एक्सपोर्ट 95% of its milk production. Can you believe it? It's because its domestic market is tiny and its entire infrastructure is built to capture global consumer. Fonterra uses corporate export strategy. सबसे पहले तो it transform raw milk into pediatric nutritional basis, complex whey isolate, and cheese protein. Then it supplies it to commercial bakeries, fast food chains, and restaurants across Asia. They have engineered cheese such that it can tolerate high temperature and withstand weather conditions. And that's how it bypasses standard retail competition. It utilizes elite genetics, massive corporate scale, and high tech processing to turn a tiny island into international dairy superpower. So, this is the end of video. I hope you got to know something new. Tell me in the comment section, what do you think about India's position as a surplus self-sufficient milk producer but a minimalist when it comes to export? Until then, bye bye. I'll meet you in another one. Bye.